Good morning, everyone. Welcome back to the online class. As today, we are going to start a new chapter that is direct and indirect speech from your grammar book. Okay, from your grammar part, I'm going to start direct and indirect speech. So, let's see what are the things we are going to see in this chapter. But before that, let's see some of the examples. Okay, read this. He said to me, John is a good boy. What you can see here? That we can see someone told that John is a good boy, okay, which is said to be direct speech, okay, where we are conveying our point or where something is like heard, okay. He said to me, John is a good boy. Read the next sentence and you'll get to know what the difference they have, okay. He told me that John was a good boy. Okay, now tell me how you will know a thing that it is a direct speech or it is an indirect speech. How you will understand indirect speech is also known as reported speech. Okay, as you have read this two example, he said to me John is a good boy and he told me that John was a good boy. Let's see when and how we can say it is a direct speech or it is a indirect speech. Okay, let's have a look on the definition of this direct speech and indirect speech. Okay, let's see. Okay, here we can say that direct indirect speech means direct speech sentences are mostly used in writing. Okay? The actual spoken word by somebody else are written as they are and are placed with a pair of quotation mark like inverted comma we can say. Okay? This direct speech is used in inverted comma means something which is heard actual spoken word होंगे वो किसी के है ना जो कोई और बोल रहा है द एक्चुअल स्पोकन वर्ड कोई और बोल रहा है जिसे हम लोग सुन रहे हैं दैट इज सेड टू बी इन डायरेक्ट स्पीच एंड इट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन इन्वर्टेड कॉमास. Let's have a look if it feels like a little bit confusing or something. Let's see. Example are like Mary said John is a good boy. Here you can see direct speech is placed only in inverted comma. You know the mark of that inverted comma ना, right? So inverted comma के अंदर में जो भी रहते हैं जो sentences है जो words है जो भी that is said to be direct speech. मतलब मैरी ने क्या बोला ये डिपेंड करता है द एक्चुअल स्पोकन वर्ड दैट इज नोन एज डायरेक्ट स्पीच. सो व्हाट डिड मैरी सेड? शी सेड व्हाट? जॉन इज अ गुड बॉय. नाउ John is a good boy is an actual spoken word, right? And we can also say what is heard or what is spoken by Mary. Now here, look at that. What these two people are doing? They are arguing something. Okay, Mary and Joseph were arguing. Tom heard Mary say that. Mary said to Joseph, "I'll kill you." And then मतलब Tom told us what Mary said in her own words. मतलब मैरी और जोसेफ जब आर्ग्यू कर रहे थे तो टॉम ने उनकी बातों को सुना और उसने क्या सुना कि मैरी ने क्या बोला है दैट आई विल किल यू, है ना. मैरी ने जोसेफ से क्या बोला है? जोसेफ और मैरी जब आर्ग्यू कर रहे थे तो मैरी ने जोसेफ को क्या बोला है दैट आई विल किल यू, आई विल किल यू. और ये बात टॉम ने दूसरे लोगों को बताया इन हिज ओन वर्ड्स, है ना. टॉम ने ये बात दूसरों को बताया इन हिज ओन वर्ड्स, राइट. तो टॉम सेड टू अस, टॉम ने हमें क्या बताया दैट मैरी सेड जोसेफ आई विल किल यू, राइट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो हेयर यू जस्ट हैव टू लुक एट कि कौन somebody is telling something in actual spoken word और बाद में हम लोग उस चीज़ को सुन के जब दूसरों को वर्ड्स दूसरों को बताते हैं इन आवर ओन वर्ड्स उसके रिएक्शन को लेते हुए बताते हैं दैट इज सेड टू बी इनडायरेक्ट. डायरेक्ट तब होता है जब हम लोग ऑलरेडी सुने हैं उस चीज़ को, लेकिन उसी वर्ड्स को जब हम लोग दूसरों के सामने बोलते हैं दैट इज सेड टू बी इनडायरेक्ट स्पीच.
Got it? So यहाँ पे Mary said to Joseph, I will kill you. It was the real and the actual spoken word. That is why it is said to be in direct speech. Okay, now let's have a look on another example in same example in another way. Okay, now Mary and Joshua were arguing. ठीक है? Mary and Joshua were arguing. Tom heard Mary say to Joseph that I'll kill you, and then Tom told others also that Mary um, said not in her own words, मतलब वो अपने words में नहीं but in an indirect way में वो बोल रहा है कि मैरी ने ऐसा ऐसा बोला that she will kill Joseph, है ना. This speech is mostly used in conversation, okay, and that's why Mary told Joseph that she would kill him. तो ये टॉम ने ये बात सुना मैरी और जोसेफ के कॉन्वर्सेशन को, एंड आफ्टरवर्ड टॉम ने इस बात को अपने ही वर्ड्स में उसे एक्सप्लेन किया दूसरों लोगों को, एंड दैट इज वाई इट इज सेड टू बी इन इनडायरेक्ट स्पीच. नाउ गॉट द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच जहाँ पे आप सुनते हो किसी भी चीज़ को, और इनडायरेक्ट स्पीच वेयर यू यूज योर ओन वर्ड्स टू एक्सप्लेन देयर ओन, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू आप दूसरों के सामने अपने तरीके से बताते हो, है ना. ओके, लेट्स हैव अ लुक हियर. दिस इज नॉट अ Let's have a look that reporting speech. There are two types of reporting speech. What somebody says, right? Somebody, when it is heard, then it is said to be in direct speech. And when somebody is telling somebody's thing in their own words, किसी और की चीज़ को अपने words में बोलना, that is said to be in indirect speech. Okay, let's have a look which already we have seen. Let's revise कि अभी तक आप लोगों ने what you have seen, what you understood. So direct speech, indirect speech, we use the speaker's own word. Okay, when we are telling something, we use किसी की बात को अगर सुन रहे हैं, we can imagine or we can summarize that in our mind in speaker's own word. जो जैसे उसने बोला है वैसा ही हम लोग imagine करते हैं, है ना. And it is always written in inverted commas, right? तो inverted commas में जो भी होंगे वो that is said to be in direct speech. Easy way to identify direct speech. Okay, and what about indirect speech? Indirect speech sometimes called reported speech, and we do not use the exact word of the speaker. वहाँ पे हम लोग अपना ही word use करते, like our own things where we can express others thing in our own word. दूसरों की बातों को अपने तरीके से बोलना, that is said to be indirect speech. Instead we report what was said. वो क्या बोला उससे मैटर नहीं करता है, हम क्या बोल रहे अपने तरीके से, दैट इज सेड टू बी इनडायरेक्ट स्पीच. वी समटाइम्स नीड टू चेंज प्रोनाउंस एंड वर्ब टेंसेस. वी डोंट यूज स्पीच मार्क्स. ओके, वहाँ पे स्पीच मार्क्स को यूज़ नहीं करते व्हेन वी change the pronouns or when we change the verb tenses. Okay, we don't use speech marks. जैसे आप लोगों ने already देखा that how this indirect speech direct speech में we are using commas, inverted commas, right? तो वैसा indirect speech में वो चीज़ यूज़ नहीं करते. Got it? जैसे I am going home, it is written in inverted commas, right? Helen said she was going home. तो हेलेन वहाँ पे जो आई एम गोइंग होम, इट इज़ द डायरेक्ट स्पीच और वी कैन से एक्चुअल स्पोकन वर्ड था वो आई एम गोइंग होम. लेकिन जब हम लोग ये बात बता रहे हैं कि अरे हेलेन ने क्या बोला था, शी वॉज गोइंग होम, हेलेन ने ऐसा बोला था, इट जस्ट टर्न्स इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. तो नाउ यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, राइट? तो आई थिंक इट इज़ मच लाइक आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में एटलीस्ट थोड़ा आइडेंटिफाई करने आ गया है कि व्हेन टू से समथिंग विच इज़ इन डायरेक्ट स्पीच और समथिंग विच इज़ इन इनडायरेक्ट स्पीच, राइट? Now we'll see some more how to punctuate direct speech. Using direct speech in your writing, you need to use the correct punctuation. Yes, punctuation is really important for writing direct speech. Okay, we use commas, we use inverted commas, and something which is really necessary. Okay, the exact word spoken must be enclosed in speech marks, मतलब inverted comma. Okay, the exact word, जैसे रमेश said what, जो भी उसने बोला होगा, जो भी
वो चीज़ आपको प्लेस करना होगा इन्वर्टेड कॉमास में, वो एक्चुअल वर्ड होगा, ठीक है, एक्चुअल स्पोकन वर्ड कि रमेश ने एग्जैक्टली क्या बोला था, ठीक है। एंड the first word of the speech must begin with the capital letter when you will put that sentence or the words which is told by that Ramesh or someone, तो आपको उसको स्टार्ट करना होगा एटलीस्ट विद द कैपिटल लेटर, ओके। तो रमेश ने क्या बोला, आई एम गोइंग होम, तो आई एम गोइंग होम में आई शुड बी इन कैपिटल लेटर, बट जनरली आई ऑलवेज रिमेन्स कैपिटल व्हेन इट इज सिंगल। अगर वहाँ पे इंस्पिरेशन होगा तब भी वो कैपिटल होगा, लेकिन इट विल बिकम मोर डिफिक मीन्स लाइक कंफ्यूजिंग, लेट्स नॉट जंप ऑन दैट word, but I will say when you will write something in inverted commas, put the word, the first letter of that particular word in capital letter, okay. The words in the speech marks must be separated from the rest of the sentences by a comma, yes। जैसे रमेश सेड वॉट, रमेश ने क्या बोला, तो जो भी बोला होगा पहले तो वो जो वर्ड्स जो भी सेंटेंसेस ही सेड इट शुड बी इन इन्वर्टेड कॉमा एंड वो सेपरेट होना चाहिए विद द कॉमा, it should be separated with the comma, got it? As we have seen that direct speech refers to the actual words of the speaker as spoken by him or her, okay. In order to show that the words have been spoken by the speaker, we use quotation marks to show direct speech, है ना? Like Rani said what? Rani said, we have to return home before it gets dark. How? You can see that how inverted commas are used, and we placed the actual word of Rani in that inverted comma. We separated that words or the sentences of Rani with the comma, right? And we also use the capital letters when we are using the Rani's word or sentences in the inverted comma. So these are the things how you will punctuate direct speech, ठीक है। तो remember that always direct speech will be in inverted comma. It will be separated with the comma from the sentences, and we will use the first letter of that word. It will be in capital letter, right? So these are the word you have to, these are the rules you have to follow while writing the direct speech. And reported speech, in direct or reported speech, someone else repeat what the speaker had originally said, but without using the speaker's actual word. उस speaker के actual word से हटकर अपने word में किसी चीज़ को explain करना, that will be said to be as indirect speech. Example, Rani said that they had to return home before it got dark. रानी ने एक्चुअल वर्ड में क्या बोला वो तो अलग बात है, वो डायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा, लेकिन रानी ने एग्जैक्टली क्या बोला था उसको अपने वर्ड्स में बोलना, दैट विल बिकम द इनडायरेक्ट स्पीच और द रिपोर्टेड स्पीच, ओके। एंड I will tell you guys that there are basic changes that will take place while changing the direct speech into a reported speech. Some of the things are like changes of tenses, changes of personal pronouns, possessive adjectives, changes of time and places. This all will be explained deeply and thoroughly after this classes, okay. As tomorrow I will explain these all the things, how you have to change, how you have to change of personal pronouns, possessive adjective and time and places, everything in the next video and in the next class, okay. So for that, up to now you have to complete, or you can ask, as it is my first class, so I'll request you all to uh, give some time over the video and make sure that are you understanding with this video or not, and let me know also what are the problems you are facing while watching the video, or what are the things you are not able to understand, okay. So let me know that all the things, and guys, have a nice day to all, and bye everyone, have a good day.